Hi, welcome you all. This is Dr. Tufail, and today we will talk about what is the research and the various types of research and how hypotheses are developed in order to continue our research activities. So, in my previous classes, we talked that research is a systematic inquiry, and through this systematic inquiry, we try to discover something new, or we want to create something new we want to refine or search again or discover already existing things or understand new things, new phenomena, to find new elements, to find mistakes, or to find new ideas supported by arguments or to investigate. So, you know that we have various type of research, basic research, applied research, or historical research, and we have this evaluative research. Uh, Basic research is in order to conduct something new, to make a new theories, to make a new concepts. We go with the basic research, and applied research is that to check the existing theories or existing practices, what we are doing. So basically, research is a systematic inquiry. It's a scientific inquiry to answer any question, to solve any problem, or to add something new in the existing wall of knowledge. The result or finding and conclusion must be supported by valid data and evidence, not by mere suppositions or presumptions or assumptions and whims. So research is different from the personal opinion. It's not based on personal opinion or personal views of somebody. It is research is always based on data, and data are evidence. That's the documented evidence. And on the basis of evidence, we find the results. We deduce, draw the conclusions. So, in this way, research differs from other disciplines which are based on opinion or ideas or assumptions or presumptions. So, research doesn't take things for granted. It means that whatever anybody says and we accept it is not a. So there's a difference between personal opinion and a research. In the past, we have been using different methods to know these things, to know to develop our understanding of our surrounding, our phenomena. The culture had remained a source of knowledge, the way we trace and where the way we bury our dead bodies, the way we marry, etc. That had been the part of culture. Traditions are also the integral part of a culture, and yes, they are. And authority has remained a source of knowledge. Suppose Aristotle said that fly had a five legs, and the people believed in it for about 2,000 years. And he said women had 30, whereas men had only 32 teeth. And in 15th century, there was a debate in a church whether a horse had upper teeth or not. They searched various books for about 15 to 16 days, but in vain. There was a young priest who proposed to go out and practically check the upper teeth of a horse. All priests cursed him and announced that he was under the spell of a Satan or devil. To see how authority had been ravaging the knowledge and how it had been uh, taken for granted. Actually, fly had a six leg, but the fly, a subtle caught and counts legs. It was missing with one leg, but it didn't bother to count, to catch, to verify his claim that whether it was six or five. And even his teeth of women have a 30 teeth and the male have a 32 teeth, so male are superior. That type of facts are what he concluded, but they were not based on the proper observation or proper data or proper evidence. So, 15th century again, that was means they didn't wish to go to the field and check a common horse with upper teeth or not. So look,
The things are taken for granted and they went to the authority and but they didn't go to the practical data, etc. Nature had remained a source of information knowledge. Leaders like authority are chieftains are. But after all things, we have come to a scientific method. And what is a scientific method? It is a systematic, scientific, guided by theory, supported by data and evidence. So this scientific method is a different than the other methods what we have been using to know or to learn anything. And we use different, there are different variables, they are controlled, they're controlled or affected by other variables. Okay, so we moved to this scientific method. Here I just switch to in other documents for further details. Now you look that when you say that this is scientific method, so what is this scientific method about? Look at that. The goal of this scientific endeavors is to explain, predict, and control phenomena, whatever the phenomena you want to understand. Result improve क्यों नहीं हो रहा? स्टूडेंट्स क्यों नहीं सीख रहे? यहाँ पे ये गुर्बत क्यों है? ये गवर्नमेंट प्रॉपर से काम क्यों नहीं कर रही? इस ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्ट फेल क्यों हो रही है? These are different things, and in order to understand the phenomenon, we move towards that, and by the help of scientific method, compared to other sources of knowledge such as experience, authority, inductive reasoning, or deductive reasoning. Applications of the scientific method is undoubtedly the most efficient and reliable. So we have been using different reasoning, may it be inductive or deductive reasonings, but the scientific method is more reliable. Basically, the scientific method involves induction of a hypothesis based on observation, deductions, or implications, and confirmations or disconfirmations of the hypothesis. So here, this scientific method, when you go with this, okay, it involves induction of hypothesis. So, when you design a hypothesis, basically, uh, but hypothesis is a kind of a calculated or educated guess what you believe that certain phenomena would be like that, or there would be possible reasons. So you move with that hypothesis, and that's based on your observations or what you think deduce, or your deductions of implications or confirmations or disconfirmations on the hypothesis. So, scientific method basically is a systematic way to conduct an inquiry and then conclude the result of that inquiry in order to find certain truth. So, research is a formal, systematic application of the scientific method to the study of the problems. Educational research is the formal, systematic applications of the scientific method to the study of educational problems. So here, because we are going to talk about educational problem, it can be literature or anywhere. You can use these things as a science, systematic method or scientific method. You can use to solve any problem because this book is written in the context of education. So he is just going to refer to education problem, but we can generalize it. So the major difference between education research and other scientific research is the nature of the phenomena studied. It is considerably more difficult to explain, predict, and control situations involving human beings by for the most complex of all the organisms. Here, the difference is that if you are going to conduct research in pure science subjects like botany, like zoology, like chemistry, like physics, or other empirical studies like connected with the society, why people get fat and why people become diabetes and what the problem diabetes people face and other type of things and what are the result of violence, etc. So those studies they are empirical or other. Each subject has its own nature of inquiry, own variables they control the study. So it differs from subject to subject. Okay, and this is how we just check
the utility or implications of the scientific method. And when we look at the research, we classify them as a basic or applied research. Okay? The basic research classification of a given study along this continuum is based primarily on the degree up to which findings have direct educational applications and the degree to which they are generalizable. Both of these criteria are functions of the research controls exercise during the executions of the study. In the purest form, basic research is conducted solely for the purpose of the theory, development, and refinement. Okay? So, with the help of a basic research, we make a new theories and we refine the theories with the additions. Okay? Whereas the applied research, as the name implies, is conducted for the purpose of applying or testing theories and evaluating its usefulness in solving educational problems. Now, see that's when you go to the concept of the new theories or the refinement of the theories, you conduct the basic research. Okay, that comes up with the new ideas, and new theories, and the new concept in the world. Okay, whereas the applied research tests or checks the already existing concepts, already existing practices, जो इस टाइम मौजूद है वो कैसे काम कर रहा है उसमें क्या फ्ला है उसमें क्या फॉल्ट है उसको कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं you go with this thing. Okay, so then you have this evolutionary research. The purpose of evolutionary research is to facilitate decision making regarding the relative worth of two or more alternative actions. Okay, now, see, this evaluative research is that when you are going to conduct a research between two things to check whether which one is a better, is it lecture method is better or this activity-based method is different, so is better. So when you are going to check these two or more of the alternative actions and the variables you want to vary to check, you go with this evaluative research. So, yes, the major purpose of research and development efforts is not a formulate or test theory, but to develop effective products for the use in the schools. Okay, so this research is okay, R&D, that's research and development. It doesn't make a new research, but it makes the products, the real products, in which we just use them in schools, etc. There's another type of research, what we call action research. Okay, the purpose of action research is to solve practical problems through the applications of the scientific method. Now, here you directly use the scientific method in order to solve any practical problem what you are facing. Okay, so these are the different type of research because our concern here would be a little research and literature, and so we are also we can to have it can have a basic research here that you can develop a new theories in literature, or you can testify apply that existing theories like post-colonialism, like structuralism, like post-structuralism, like feminism, like Marxism, so that type like psychoanalysis, are that you can also use a care theories, etc. You can just either apply these theories and you check it to what extent the literature and theories are connected with one another, and to what extent they are going to confirm each other, and if they are connected then so how, so that is where we find this concept of. Now, when we connect inquiry, we have approaches, and we have generally research has a two approaches. It could be qualitative versus quantitative approach. Now, what's the difference between quantitative and qualitative? It's very important to understand, okay, because you are students of research and literature, and most often the studies you would conduct, they would be qualitative in its form and structure, but again, there could be the certain cases where you could go with the quantitative in the linguistics and other sort of areas or language areas. Well, so, what is the difference between qualitative and quantitative? Yes, there is a degree of overlap. Most research studies represent the readily identifiable approach और strategy. कभी कभार एक दूसरे को ओवरलैप करते हैं, लेकिन फिर भी हमें रिसर्च में उसके एक में स्ट्रेटेजी रखनी होती है जो हम तय करें कि ये क्वालिटेटिव है quantitative. So all studies have certain procedures in a common, such as data collections, analysis. Beyond these specific procedures are to
high degree determined by the specific type of research involved. Definitely, we have a certain way to research. So the terms qualitative and quantitative are used not so much because they involve mutually exclusive unique research strategies and methodologies, but rather because they conveniently differentiate one from the other. ये एक दूसरे से सेपरेट करते हैं जिससे हमें वो स्टडी कंडक्ट करने में आसानी होती है क्वालिटेटिव अप्रोच इन्वॉल्व द कलेक्शन ऑफ एक्सटेंसिव नैरेटिव। देखिए जो क्वालिटेटिव रिसर्च होती है उसमें जो डेटा होता है वो नैरेटिव होता है। रिसर्च में हमारा लिटरेचर के रिसर्च में ज़्यादातर डेटा नैरेटिव होता है। वर्ड्स होते हैं जिनको आप जिस पे आप बात करते हैं, वर्ड से ही आप डेटा निकालते हैं, वर्ड से आप कंसेप्ट निकालते हैं, वर्ड से ही आप अपनी जो है ना वो आइडियाज़ को क्लियर करते हैं और जो भी कुछ होता है। सो दिस हमारे पास नंबर नहीं होते, डिजिट्स नहीं होते। जिस तरह कितने स्टूडेंट आए, कितने टीचर आए, कितनी क्लासेस हुई, फिर वहाँ पे रिजल्ट कितना आया, मार्क्स कितने आए, तो ये डिजिट्स की बात हो रही है, न्यूमेरिकल्स की बात हो रही है, जो क्वांटिटेटिव में ज़्यादा होते हैं। क्वालिटेटिव रिसर्च में ज़्यादातर पे डाटा इज नैरेटिव्स, फिनोमेना इज and involve the collection of numerical data in order to explain, predict, or control phenomena or instances. Okay, and whereas in other way, in quantitative data, data is a numerical. Qualitative research typically study many variables intensely over an extensive period. एक बात है qualitative research में there could be multiple variables and it could go be for extensive periods of time in order to find out the way things etc. How and why they came to be that way कि वो ऐसे क्यों है and what it all means उसका क्या मतलब है। जबकि क्वांटिटेटिव जो रिसर्च होती है कॉन्वर्सली टिपिकली concentrate on one or a small number of variables in order to describe current conditions or to investigate relationship including cause and effect relationship। एक बात ये भी होती है कि क्वालिटेटिव रिसर्च ओवर द पीरियड एक लॉन्ग पीरियड को कवर करती है जबकि क्वांटिटेटिव में हम जो है ना वो एक करंट सिचुएशंस को देखते हैं कि उस टाइम उसकी क्या सूरत हाल है। ज़रूरी नहीं वो सूरत हाल 10 साल के बाद हो लेकिन गिवन सर्टेन सिचुएशंस के अंदर वो क्या है किस तरह है। सो वी यूज दिस थिंग इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड क्वालिटेटिव रिसर्च डोंट वांट टू इंटरवीन or to control anything. Quantitative research often intervene and attempt to control as many variables as possible. Okay, so that's where कि वहाँ पे आप के वेरिएबल्स को आप कंट्रोल करते हैं। फिर आप अगर ये चेक करना चाह रहे हैं कि अटेंडेंस से क्या फ़र्क पड़ रहा है तो आप एक वेरिएबल्स को जो है ना वो कर दें बाकी को छोड़ देते हैं लाइक दैट। ओके, सो किसी एक वेरिएबल की मदद को कंट्रोल करके क्वांटिटेटिव रिसर्च कंडक्ट करते हैं और क्वालिटेटिव में you allow the variables to emerge and out of that thing you go with this thing. So when you talk about qualitative approaches, अब ये क्वालिटेटिव अप्रोचेस में क्या चीज़ें आप कंडक्ट कर सकते हैं। क्वालिटेटिव अप्रोचेस कैन बी अप्लाइड टू द स्टडी ऑफ द पास्ट इवेंट्स। अगर आप हिस्टोरिकल फैक्ट्स को पढ़ना चाह रहे हैं कि वो क्या हुआ था या करंट इवेंट्स को पढ़ना चाह रहे हैं ये भी क्वालिटेटिव है। द टर्म क्वालिटेटिव अप्रोच इज ब्रॉडर इन स्कोप देन आइदर हिस्टोरिकल रिसर्च और क्वालिटेटिव रिसर्च। तो ये क्वालिटेटिव जो टर्म है ये बहुत ब्रॉडर है जिसमें बहुत से एस्पेक्ट्स जो है ना वो कवर हो सकते हैं। आप हिस्टोरिकल रिसर्च को भी इसकी मदद से कंडक्ट कर सकते हैं। द पर्पस ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च इज टू arrive at a conclusion concerning cause effects of change of the past occurrences। माजी में कोई चीज़ हुई हो और वो कैसे हुई हो और इसका हमारे लिटरेचर में भी बहुत ज़्यादा रेलेवेंस है इस पास्ट का कि वो किस चीज़ से जो है ना वो चीज़ें कनेक्ट हुई है कि एक्सटर्नल क्रिटिसिज्म assessments and the authenticity of the data. Our internal criticism evaluates their words. Okay, so this is how you can conduct this qualitative research in the perspective of history। और अगर आप लिटरेचर में जाएंगे तो आप किसी भी वर्क को अगर आप देखना चाहें तो आप ये भी देख सकते हैं कि वो वर्क जिस हालत में लिखा गया था उस दौर में उसकी क्या सूरत हाल थी और उसको किस तरीके से जो है ना वो किस किस हालात ने शेप किया था। तो इसी सेंस के अंदर दिस इज वेरी मच रिलेवेंट इन योर लिटरेचर एज वेल to connect in its historical perspective. So, qualitative research often referred to in education as a ethnographic research। Okay, चूँकि यहाँ पे ये ethnographic research से मुराद है कि एक मखसूस सोसाइटी के अंदर कौन सी चीज़ कैसे पनपती है। So involves intensive data collections, that is a collection of extensive narrative data on many variables over the extended period of time in a naturalistic setting।
देखिए ना, एक डेटा आप जाते कर कलेक्ट करते हैं और फिर ज़्यादा देर तक 1 दिन नहीं 6 महीने, 8 महीने, 2 साल डेटा कलेक्ट करते हैं और करते भी नेचुरल सेटिंग में वहाँ जाकर प्रैक्टिकल फील्ड में करते। उसके बाद आप जो है ना वो देखते हैं कि ये क्या हो रहा है। Qualitative research are not just concerned with describing the way things are, but also with gaining insights into how things got to be the way of it. So, उसमें हम ये देखते हैं कि how they are connected there, and we believe that the meanings what you come out of that thing, it could be using that thing, but somehow कभी कभार जो है ना वो इन चीज़ों को बेहतर समझने के लिए हम दोनों मेथड को यूज़ करते हैं, यूज़ द वैरायटी ऑफ मेथड एंड डेटा कलेक्शन strategies. Qualitative research often characterized as being a multi method. तो उसमें ये चीज़ होता है कि आप डिफरेंट तरीक़ेकार यूज़ करते हैं डेटा कलेक्शन के लिए, therefore you call it as a multi method as well. But the most common data collection strategy used, however, is the participants' observation, usually supplemented by collections of relevant documents and extensive informal interviews. इंटरव्यू करें, ऑब्जर्वेशन करें, फील्ड से डेटा कलेक्ट करें और इसी से आप जो है मोस्ट क्वालिटेटिव जो रिसर्च होती हैं। अब देखें, ये मैं आपको रिसर्च यहाँ पे ब्रॉडर टर्म में पढ़ा रहा हूँ ताकि पहले आप एक जर्नली रिसर्च को समझ पाए, उसके बाद लिटरेचर में जब आप जाएंगे तो आप अपनी बुक्स तक और अपनी लिटरेरी फील्ड तक जो है ना उसको समझ करेंगे। जहाँ तक क्वांटिटेटिव रिसर्च की बात है कि स्टडीज डिजाइन बाय डिस्क्राइब न्यूमेरिकली करंट कंडीशंस आर रेफर्ड एज ए डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। ओके, ये डिस्क्रिप्टिव रिसर्च होती है जो आप बताते हैं कि ये चीज़ें अभी क्या है, इस टाइम बदी इनकी टीचिंग सिचुएशन क्या है। Studies which investigate the relationship between two or more quantifiable variables are referred to as a correlation research. अगर आप एक ऐसी रिसर्च करें जिसमें आप दो वेरिएबल्स के दरमियान रिलेशनशिप को चेक करें तो वी कॉल इट एज ए कोरिलेशन रिसर्च। ओके, कि लेक्चर मेथड और टीचिंग मेथड में क्या फ़र्क है और लाइक दैट यू गो विद दिस। These studies which investigate cause and effect relationship are called the causal, comparative or experimental research. अगर cause and effect, अगर हम ये cause होता है तो effect क्या होता है, स्टूडेंट्स नहीं आते तो effect क्या होता है, टीचर नहीं आता तो effect क्या होता है, स्कूल में टाइम टेबल नहीं होता तो effect क्या होता है। तो these are causal connections, cause and effect relationship research. Okay, they talk about this. So in the case with the descriptive research involves collecting data in order to test hypotheses or answer questions concerning the status of the subject of a study. Descriptive research ये होती है जिसमें आप चीज़ों को डिस्क्राइब करते हैं कि वो क्या है, कैसी हैं, क्या सूरत हाल है, उनकी क्या कंडीशन है, यहाँ के इस बदीन में इंडस के आने से फिर क्या हुआ है, लोगों को क्या क्या फ़ायदा हुआ है। तो इस तरीके की चीज़ें होती हैं जिसमें आपने डिस्क्रिप्शन देनी होती है। Descriptive data are typically collected through the questionnaire survey एंड इंटरव्यू एंड ऑब्जर्वेशन। तो आप मरीज ने जाकर पूछा, डॉक्टरों से पूछा, लोगों से पूछा, इंडस के आने से क्या फ़र्क हुआ और उसके बाद आपने उस चीज़ को बताया। सिंस वन इज generally asking questions that have not been asked before. Instruments usually have to be developed for the specific studies. अब आपने इंडेक्स के बारे में लोगों से पूछना है तो आपने जो सवाल करने हैं वो एक ऐसे सवाल हैं जो आपने खुद पहले बनाने हैं, फिर उनसे सवाल इकट्ठे करने, जिससे आपका वो जो है ना वो डेटा कलेक्ट होगा। उसके बाद फिर आप जो है ना उसकी चीज़ों की डिस्क्रिप्शन देंगे। Correlation research attempts to determine whether and what degree of relationship extends exists between two or more quantifiable variables. इसमें हम देखते हैं कि दो वेरिएबल्स का आपस में क्या ताल्लुक है, टीचर का और टीचर के पढ़ाने का रिजल्ट पे क्या ताल्लुक है, स्टूडेंट्स का और स्टूडेंट्स के अटेंडेंस का रिजल्ट पे क्या ताल्लुक है, या इस तरह की चीज़ें जिसको दो वेरिएबल्स को। द पर्पस ऑफ कोरिलेशन स्टडी मे बी टू एस्टेब्लिश ए रिलेशनशिप और ए लेक ऑफ इट, ये बताना कि इन चीज़ों का आपस में कोई लिंक है या नहीं है और उस चीज़ को प्रेडिक्ट करना। दैट्स व्हाट फ्रॉम द फैक्ट दैट टू वेरिएबल्स आर हाईली रिलेटेड वन cannot correlate that one is the cause of the other। तो वो एक दूसरे से कैसे कोरिलेट होते हैं, एक दूसरे से कैसे उसका काज या सबब बनते हैं, वी कॉल इट as a correlation research, and they also show the cause and effect of these things regardless of whether a relationship is a cause and a relation. The existence uh, uh, is of a high relationship permits predictions। तो उनके दरमियान जो आपस में ताल्लुक बनता है उस ताल्लुक की बुनियाद पर आप जो ये तय करते हैं कि आया उनमें कोई लिंक है नहीं है, अगर है तो किस तरह का है, अगर नहीं है तो किस तरह का नहीं है। सो दिस the degree of relationship between two variables is generally expressed as a correlation coefficient
which is the number between 0 to 1. ओके, उनका आपस में क्या जो है ना कोरिलेशन बनता है, तो वो उसकी जो डिग्री होती है वो जनरली हम 0 से लेकर 1 तक उसी को जो है ना वो ऐड करते हैं. देन वी हैव अ causal comparative and experimental research. This type of research is the activity or characteristics believed to make a difference is referred as the cause or a treatment, and more generally as the independent variable. So the difference or effect which is determined to occur or not occur is referred to as a dependent variable. इसमें ये होता है कि एक जो वेरिएबल है वो दूसरे पे डिपेंड करता है, और करता है या नहीं करता ये हमने रिसर्च करके जो है साबित करना होता है. इन एन एक्सपेरिमेंटल स्टडी द रिसर्चर मैनिपुलेट्स at least one independent variables and observes the effect on the one or more dependent variable. उसमें एक वेरिएबल को वो चेंज करता है, फिर देखता है कि दूसरा जो डिपेंडेंट वेरिएबल है उस पर क्या असर पड़ता है या नहीं पड़ता. अगर पड़ता है तो फिर वो बताएगा कि ये चीज़ से रिलेटेड है, ये चीज़ नहीं है, ये चीज़ इसके काजल कनेक्शंस में कंपैरेटिव में आती है या नहीं आती. तो ये चीज़ जो है ना वो हम चेंज कर सकते हैं कि इसके चेंज करने से इसमें कोई फ़र्क नहीं. So, ideally, in experimental research, the group to be studied are randomly formed before the experiments, a procedure not involved in the other methods of research. Okay. So, the essence of experimentation is control. In this way, you would simply control that thing, and only experimental research can truly establish cause and effect relationship between that. Okay, जिसके दरमियान आप उनकी cause and effect relationship को तय करते हैं इसकी मदद से. So due to the lack of manipulations and control, cause and effect relationship established through causal comparative research are at best tenuous and tentative. उस पे आप ये जाकर तय करते हैं कि कौन सी चीज़ जो है कहाँ पे ज़्यादा इफेक्टिव है और किस तरह का उसका उस पे असर हो सकता है या नहीं हो सकता. तो असल बात है कि ये जो 6 types of most appropriate for given study depends upon the way in which the problem defined. आपका प्रॉब्लम क्या है, उसको आपने किस तरह सॉल्व करना है. सेम जनरल प्रॉब्लम्स कैन ऑफन बी इन्वेस्टिगेटेड यूजिंग सेवरल ऑफ द टाइप्स. अब एक ही बुक है, आप क्योंकि यहाँ पे एजुकेशन है तो आप उसको मुख्तलिफ तरीके से देख सकते हैं. आप अपने बुक को उसी बुक को ना फिक्शन का के किसी वर्क को आप जो है वो क्रिटिसिज्म के हवाले से अगर देखना चाहें तो आप मार्क्सिस्ट थियरी के एतबार से देख सकते हैं. आप उसको जो है वो पोस्ट कॉलोनियल कंसेप्ट से देख सकते हैं. आप उसको फेमिनिज्म के कंसेप्ट से देख सकते हैं. लाइक दैट थिंग. So they are very much there to be used like. So when analyzing a study in order to determine a specific type of research represented in one strategy is to ask yourself a series of questions. First, does the study represent a qualitative or a quantitative approach? तो पहले आप ये देखें कि इसमें कौन सी चीज़ ज़्यादा वैलिड है जब आप रिसर्च करने जा रहे हैं, क्वालिटेटिव या क्वांटिटेटिव. If the study is qualitative, it should easily be differentiated between historical and qualitative studies. आया वो तारीखी है कि पर्सपेक्टिव में पढ़ देखनी है या जनरल हिस्ट्री जनरल क्वालिटेटिव स्टडी. If the study is quantitative, was the researcher attempting to establish a cause and effect relationship? क्या उसमें cause and effect relationship को तय कर रहा है. Was the alleged cause or independent variables manipulated by the research? क्या उसमें एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स को जो है ना एलिज के उसको जो है ना वो मैनिपुलेट करके वो देखेगा कि दूसरे डिपेंडेंट वेरिएबल पे क्या असर पड़ता है. Was the researcher attempting to establish a relationship? या उन दोनों को में रिश्ता क्या है. Or use a relationship for prediction? उस रिश्ते की बुनियाद पर वो कोई प्रोडिक्शन करे. So these are the different things. Okay, what they use is जिसको हम ट्रायंगुलेशन भी कहते हैं. लेकिन अब जो है ना क्योंकि हमारा जो ज़्यादा काम है वो लिटरेचर के अंदर है, तो लिटरेचर के अंदर जब हम रिसर्च में जाएंगे तो हम ये देखेंगे कि आप जिस वर्क पे काम कर रहे हैं उसमें आप क्या देखना चाह रहे हैं. तो पहली बात जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि आप जब रिसर्च कर रहे हैं तो आप ये तय करें कि आपने उस रिसर्च में क्या देखना चाहते हैं, क्या करना जो है ना वो हासिल करना चाहते हैं, और उसको आपने किस तरीके से जो है ना वो हासिल करना है. तो पहली बात बहुत इम्पोर्टेंट ये होगी कि आप ये तय करें कि आप के जो जो टॉपिक है जिस पे आप रिसर्च कर रहे हैं वो रिसर्चेबल हो. फिर उसमें आप क्या देखना चाहते हैं, किस पॉइंट ऑफ व्यू से आप उसको देखना चाहते हैं, कौन सा थ्योरी आप इस्तेमाल करना चाहते हैं जो आपका थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क है जो उस रिसर्च को लीड करेगा. तो दिस इज हाउ you can just develop your concept in research in literature, and in the next class we would explore and other areas of this relating to basic concepts of research. Then we would move forward towards the
specific areas from the research and literature. Thank you very much for your time. Stay focused with your studies till we are allowed to meet in the classes back after this COVID break. Thank you very much.